Hi, I'm Siddharth Vardarajan, founding editor of The Wire. Welcome to day 2 of Justice Rocks Armed and Dangerous. This event has been organized by the Vetiver Collective in collaboration with The Wire. An amazing range of artists and musicians have lent their support for this movement, which is calling for an end to police brutality. The Wire is glad to be the platform for this clarion call. Like I said yesterday, we hope that this message, conveyed through music and poetry, inspires you to demand solutions to this hard and complex problem. I won't take any more of your time. Let's hear what Rahul Ram and Sanjay Rajora from Aisi Taisi Democracy have to say. Hi everybody, this is Sanjay Rajora. Hello. And I'm Rahul Ram, and we are 2/3 of a political commentary and satire group called Aisi Taisi Democracy. And we are really very happy to be here this episode of Justice Rocks, because it's on police brutality, and this is something we have experienced and we feel very strongly about. And so we're going to start off with a little bit of a song, and then we're going to have a chat. बट आप तो पुलिस ब्रूटैलिटी को आपने कुछ हम सबसे ज़्यादा नज़दीक से देखा ना? Yes, actually I was in jail and a while ago, and before that, when I had been arrested and I was in the lockup, they used to take us out to do our morning stuff, two of us handcuffed to each other. So we were made to crap on the side of a road in handcuffs while a policeman stood with a rifle behind us. It's not particularly conducive. हो कैसे जाती है? सर वही तो मैं कह रहा हूँ, it's not particularly conducive, पर क्या करें, तो ऑप्शन ही नहीं है. वैसे ही कोई राइफल पॉइंट करेगा तो निकल जाएगी. So okay, here we go. गोली मार भेजे में भेजा शोर करता है जम के पेल स्टूडेंट ज्यादा पढ़ता है. क्यों नहीं समझे? सच है ना? A one, a two, a one. गोली मार भेजे में भेज शोर करता है जम के बेल स्टूडेंट को. स्टूडेंट ज्यादा पढ़ता है. किताब की कहेगा तुम मारेगा मामू, हिसाब जो गिनेगा तुम्हारे का मामू. मामू दरोगा मामू, मामू दरोगा मामू. गोली मार भेजे में आजादी का केक सिर्फ देख ज्यादा सोचना. कहे मामू अपना पीस मांगे तो है देश की आलोचना. कहे मामू मामू आजादी का केक सिर्फ देख ज्यादा सोचना. अपना पीस मांगे तो है देश की आलोचना. लटका लटका मार फटका पिचका दे टपका टपका खून टपका. विकास जो बनेगा तो मारेगा मामू. मामू दरोगा मामू, ए मामू दरोगा मामू. सर ये जो लास्ट लाइन आपने गाई ना, इससे मुझे एक किस्सा याद आ गया. ये क्या कहना चाह रहे हो कि विकास जो बनेगा तो मारेगा मामू? मारेगा मामू.
कहना क्या चाह रहे हैं? सर कि हम विकास की खोज में हैं तब से। मिल तो गया था, हाँ, वो तो मिला था। और मामू ने अपना कर्तव्य दिखाया। अरे भाई साहब, सिर्फ कर्तव्य नहीं दिखाया, मैं आपको बताता हूँ कि इतना इसका असर पड़ा है हमारे पूरे देश पे कि देयर वाज एन RWA मीटिंग, रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन मीटिंग एट माय प्लेस, ओहो, and something was suggested and somebody said, no, we can't do that, that's against the law. At which point this man stood up and said, the Vikas Dubey encounter shows us that even the government doesn't bother about the courts and the law, so why should we? This is the message that's being sent out. बात तो लॉजिकल है। बात लॉजिकल है, you see, because we Indians are very quick and good at logic. We catch on to these things. हमें जस्टिस में इंटरेस्ट नहीं है, हमें रिवेंज में इंटरेस्ट है। नहीं, instant justice. Which is revenge only. कभी तो हुआ तो था कानपुर में भी एक किस्सा हुआ था ये कि बकरी को पकड़ लिया पुलिस ने कि उसने मास्क नहीं लगा रखा था। An unmasked goat. हाँ, तो वो बकरी भी जब उसको थाने में ले जा रहे, बकरी भी सोच रही होगी जिस गाड़ी में ले जा रहे पलट ना जाए कहीं। हाँ, फिर मैं भागूंगी, फिर विकास हो जाएगा मेरा। आपने देखा है हमारे यहाँ ये नहीं बोलते कि एनकाउंटर हो गया, हाँ, हमारे मतलब एनकाउंटर कर दिया। We did an encounter. हाँ, वो वर्ब को कैसे चेंज किया है। हाँ, तो मतलब कि हम इसका एनकाउंटर करेंगे, कर दिया, ये नहीं कि एनकाउंटर हो गया। तो इस पुलिस की तो बड़े सारे कारनामे आपको No, पता come है। on, you remember Hyderabad when they killed those 4 people and people showered the police with petals. So it's become now a national thing that we will congratulate the same people that we otherwise deride as being corrupt and as being brutal and as being violent. When they do the violent stuff, we appreciate them. I mean, everybody knows here, I'm sure, Tamil Nadu, what happened there. But we're going to have some interesting stuff from you because you are. हमारे यहाँ तो गांव में ऐसा होता है ना सर जी, पुलिस उठा के लेके चली जाती है ना, किसी को भी नाजायज भी उठा के लेके, तो गांव वालों में खलबली ये नहीं होती है कि भाई इसको गलत उठा के लेके गए हैं और जो है ये तो ये गैर कानूनी काम है, इस चक्कर में पड़ते ही नहीं है। उनका जो पहला प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि भाई पीटे ना, तो वो सिफारिशें लगाते हैं इधर उधर से किसी तरीके से कि जो भी सब इंस्पेक्टर है या ASI है जो भी उठा के लेके गया उससे जान बचान निकल जाए, ताकि जिसको नाजायज भी उठा के लेके गए हैं उस पर लठ ना पड़े, क्योंकि लठ तो पड़ते हैं। लठ तो पड़े, ये तो होगा ही, पुलिस तो मारेगी, तो हम ऐसे करते हैं कि कम कम मारें। और वो लटका क्या मारते हैं? लटका पिचका देते हैं। और पुलिस के और भी बहुत सारे, जैसे एक किस्सा तो मैंने आपको भी बताया था कि मेरा एक दोस्त इंग्लैंड में बहुत साल रह के आया, यहाँ यूपी में अपनी किसी फीमेल फ्रेंड का शायद गर्लफ्रेंड रही होगी, उसकी उस वक्त हाथ पकड़ के घूम रहा था, पुलिस आ गई। अच्छा, मैंने पहले भी क्या वैसे नहीं आते हैं, अगर आपके घर में चोरी डाका मर्डर कुछ हो जाए तो बोला ये तो आपका आपस का मामला है यार, इसमें हमें क्यों परेशान कर रहे हो हैं। अब वहाँ वो लड़की का हाथ पकड़ के घूम रहा, पुलिस वाला के पूछता भाई कौन है, किस लिए घूम रहे, तो उसने बोलता फ्रेंड है। फ्रेंडशिप ना दिल्ली में जाके चलाइयो हैं। तो कहता है वो आके मेरे सामने बड़ा गुस्सा कर रहा कि हाउ कैन दे डू दिस, द कॉप्स आर देयर टू सर्व अस, दिस इज अ वायलेशन ऑफ अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट। मैंने उसको कहा भाई सुन, तो आया इंग्लैंड से, यूपी पुलिस के सामने जाता है, इंग्लैंड मत बन, उनको अंग्रेजी का एक ही वर्ड आता है, एनकाउंटर। और सच बात है, अंग्रेजी में सच में एक ही वर्ड आता है। आपने सुकेतु मेहता की किताब में पढ़ा होगा सर, वो मैक्सिमम सिटी में उसने एक इंसिडेंट बयान किया है, मैं दुनिया की किसी पुलिस में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट नाम की कोई पोजीशन ही नहीं है। आपने इतनी आजकल तो नेटफ्लिक्स आ रहा है, इतनी सारी क्राइम सीरीज आ रही हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की, यूके की इतनी क्राइम सीरीज हैं, आयरलैंड की है, पुलिस के पास ना पिस्टल भी नहीं होती है, डंडा भी नहीं होता है, यहाँ पे लाठियां लेके ऐसे घूमते थे, ढो डांगरों को हाँकते हैं ना, चलो भी साइड में लाइन में लगो, लाइन में फटाफट फटाफट ऐसे पेलते हैं। अब हमने देख लिया ना माइग्रेंट्स जब जा रहे थे कैसे पढ़ रहे थे उनको। तो वो जो है कि बंबई में एक हाथी पागल हो गया, लोगों ने पुलिस बुला ली। हमारे यहाँ तो ये भी होता है ना, कुछ भी पानी नहीं आ रहा पुलिस बुला लो, पार्किंग का कुछ मसला हो गया पुलिस बुला लो, बात बात पे जागरण की आवाज़ दे जा रही है पुलिस को बुला लो। कायदे में पुलिस को आना चाहिए जागरण के मामले में। तो नहीं ऐसा मत बोला करो। क्यों? देखो, भगवान का एनकाउंटर अच्छा एनकाउंटर होता है सर, भगवान के साथ एनकाउंटर होता है आमने सामने। ये जो यूपी पुलिस की जो एनकाउंटर, दिल के अंदर पुलिस के एनकाउंटर की परिभाषा कुछ और है। हाँ, सही बात। तो वो हाथी आ गया, हाथी पागल हाथी घूम रहा है, लोगों ने पुलिस बुला दी, उसमें एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट आ गया, उसने कुछ मीटर की दूरी से एक फुल्ली ग्रोन एलिफेंट पे 7-8 राउंड फायर करे, एक भी नहीं लगा, हाथी पे एक भी गोली नहीं लगी। क्यों? क्योंकि इनको पकड़ के और बांध के मारने की आदत है। हाँ, हाथी को अगर बांध देते तो शायद लग जाता। तो उस पर तो एक पुराना चुटकुला भी है ना सर, एक जोक भी है, क्लिंटन का हिरन। हाँ नहीं, वो छोड़ दो, मेरे को आगे बताओ कि तुम मेरे को एक बड़ा सुंदर किस्सा सुना रहे, तेरे फैमिली में
आधे पुलिस में और आधे चोर है। चोर नहीं सर, इतने नीचे नहीं है, क्रिमिनल सर। क्रिमिनल। चोर क्या मतलब किसी कपड़े चुरा के भाग रहे हैं क्या यार? बर्तन चुरा के भाग के चोर तो वो काम करते हैं, हमारे यहाँ सॉलिड क्रिमिनल सर। क्रिमिनल हाँ। हम सरकार चलाते हैं सर, हम हमारे यहाँ के लोग। तो कई बार जिनको पुलिस में होना चाहिए था वो क्राइम में चले गए, क्राइम में होना चाहिए था वो पुलिस में चले गए हैं। तो ये तो मेरे यहाँ खूब होता जाता, मैंने करीब से देखा है। चचा था ना तो कोई है, चचा मेरा जो है यूपी के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, अच्छा उपाधि है, कॉप रिटायर हुए वो। तो एक दफ़ा वो मेरे शो में आके मतलब मेरे को कहने लगे कि भाई तू क्या शो करता है, मैं भी चलूँगा देखने के लिए। तो मैंने कहा चल लो, तो मेरे कहीं शो था वहाँ पे, वो मेरे साथ चल लिए साथ में बैठ के। वहाँ पे आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस पुलिस एट्रोसिटीज़ ओनली, कि भैया कि हमारे यहाँ तो मतलब जैसे वो होता है ना कि विदेशी सीरीज़ होती हैं CSI मायामी और वगैरह, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, तो वहाँ पे दिखाते हैं कि अभी क्राइम सीन पे पुलिस वाले को एक बाल भी मिल गया तो बाल को फोर्सेप्स से उठा के कहते हैं गॉचा, फिर बाल का वो DNA टेस्ट वगैरह करा के उस कातिल तक पहुँच जाते हैं। तो हमारी पुलिस भी कातिल तक पहुँचती है, लेकिन वो बाल के टेस्ट DNA टेस्ट वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ती है। उनके पास होता है एक डंडा जिस पर लिखा होता है आन मिलो सजना। उस डंडे में इतनी ताकत रख दिया है कि एक क्राइम के लिए 4-4 लोग कन्फेस कर जाते हैं अलग अलग शहरों में। मतलब उस डंडे के बारे में कहा जाता है कि सही टाइम पे राजीव गांधी को पड़ गए होते तो इंदिरा गांधी का मर्डर अगले दिन ही सॉल्व हो जाता। तो वो ऐसी वो अपने चचा को लेके मैं वहाँ पे गया, तो वहाँ पे मैं ये सब बातें बता रहा था। तो मैंने कहा कि दुनिया की किसी पुलिस में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की पोजीशन नहीं है, ये एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ये होता है, खुद ही जज खुद ही एग्जीक्यूशन होता है। और ऐसे ही एक महान एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हमारे बीच में बैठे हुए हैं। मेरे चचा को लगा कि कोई क्रेडिट की बात है, वो खड़े हो गए, पब्लिक ने ताली बजा दी, चचा कर रहे हैं। फिर घर पे आ कहते हैं आज तो मेरे बेटे ने मेरा नाम रोशन कर दिया। पूरी सभा में खड़े होके ताली बजवाई मेरे से। पर ये लोग ताली बजा रहे थे, हूटिंग कर रहे थे। अब वो सर चचा को तो हाथ हिलाने थे ना कि मैन ऑफ द मैच मिल गया मेरे को आज। तो वो तो ऐसे करे, तो वो तो बड़े खुश हो गए। तो आज तक उस बात का एहसान मेरे पे मानते कि तूने उस दिन मेरा नाम रोशन किया था। तो पुलिस वालों से तो मुझे तो डर लगता है सर, चाहे मेरी फैमिली में आधे हैं, लेकिन मैं उनसे उलझना नहीं चाहता, क्योंकि फिर आपको पता ही है कि मेरे से भी गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है। नहीं, गुस्सा नहीं होते पुलिस वालों पे, कभी गुस्सा नहीं होते। पैसे देते हैं, मेरे पास पैसे भी नहीं है। हाँ ये भी, तू गरीब भी तो है। हाँ गरीब गुस्सा वाला तेरा नाम रखते हैं सर। गरीब गुस्सा वाला कितना अच्छा नाम होगा। गाने सोच, जाने माने शायर हमारे गरीब गुस्सा वाला। हाँ, गुस्से में भी हम नुक्ता लगा देंगे। ठीक है सर, मेरी पर्सनैलिटी में तो नुक्ता लगा नहीं आज तक, आपसे इतने सालों से। पर्सनैलिटी के नीचे नुक्ता लग ही नहीं सकता सर। यही कहते हैं सर। अगला वर्ष शुरू करें सर। हाँ बिल्कुल। तो इससे मुझे याद आया कि हम जो कहते हैं कि न्याय के लिए तो जाते हैं ना थाने में, वही ना, न्याय लेने के लिए जाते हैं ना, कि कोई न्याय इंसाफ मिल जाए वहाँ पे जाके। तो उसके ऊपर हमारा एक छोटा सा सेम गाने का दूसरा वर्ष है। शोर करता है, न्याय व्याय सब है, न्याय व्याय क्या है, बस है गांधी जी के फोटो पर। मामा कहे मामू, सहमे जाए आज थानों में अम्बेडकर। मामू कहे मामू, न्याय व्याय क्या है, बस है गांधी जी के फोटो पर। सहमे जाए आज थानों में अम्बेडकर। कस्टडी में फंस गया तो कोई हक नहीं, कोई हक नहीं, चलने लायक ना रहेगा, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। सवाल जो करेगा तो मारेगा मामू, मामू दरोगा मामू, मामू दरोगा मामू। गोली मार भेजे में भेज चोर करता है, गोली मार संविधान को, विधान बोर करता है। विधान की कहेगा तो मरेगा मामू, किसान की कहेगा तो मरेगा मामू। मामू दरोगा मामू, या मामू दरोगा
मामूर गोली मार के जेब में थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद। देखिए, ये दिल्ली राइट इन्वेस्टिगेशन जो है वो एक खुला धमकी भरा कॉन्स्पिरेसी है, जिसका मकसद लोगों को ये बताना है कि आप खामोश रहें, आप बोले नहीं। भले ही जुल्म आपके ख़िलाफ़ क्यों ना हो रहा हो, आप पर ही क्यों ना हो रहा हो, आप आवाज़ ना उठाएं, वरना आपका हश्र वही होगा जो एंटी सीए प्रोटेस्टर्स का हुआ था। वरना ऐसा क्यों है कि जितने लोगों पर यूएपीए लगा है वो सब के सब एंटी सीए प्रोटेस्टर्स हैं। 21 लोगों पे यूएपीए लगा है, 15 लोगों पर चार्जशीट दायर की गई है, वो सब टेररिस्ट हैं। वो सब टेररिस्ट नहीं हैं, वो सब के सब स्कॉलर्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, स्टूडेंट्स हैं। वो लोग हैं जिनमें इतनी हिम्मत थी कि वो सच बोल सकें, जो गरीब मज़लूमों के लिए खड़े हो सकें, सबके लिए इक्वल सिटीज़नशिप मांग सकें, सबको बराबरी से ट्रीट किया जाए इस मुल्क में, ये मांग कर सकें। ये वो लोग थे। उन पे आप इस तरह का आतंकवाद का इल्ज़ाम लगाकर उनको अंदर कर दिया गया है। और अब वो लोग इंतज़ार में हैं, जेलों में सड़ रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ट्रायल शुरू होगा, जो शायद 10 साल में शुरू हो, 15 साल में शुरू हो, 20 साल में शुरू हो, या शुरू ना भी हो। और दूसरी तरफ वो तमाम लोग हैं जिसको पूरी दुनिया ने देखा है सरेआम, जिनको बोलते हुए कि गोली मार दो, गोली मारो फलाना को, वगैरह वगैरह वगैरह। तो उन पे एक एफआईआर भी नहीं है। तो देखिए, अब सवाल ये बनता है हमारे लिए कि एक समाज होने के नाते, एक मुल्क होने के नाते, हम एक जस्ट समाज चाहते हैं, एक ऐसा समाज चाहते हैं जहाँ इंसाफ हो मज़लूम के साथ। हम एक ऐसा समाज चाहते हैं जहाँ आज़ादी हो। अगर हम ये चाहते हैं तो हमको आवाज़ उठाना पड़ेगा इनजस्टिस के ख़िलाफ़, हमको खड़ा होना पड़ेगा इन तमाम प्रोटेस्टर्स के साथ, उन तमाम लोगों को जिनको एक कॉन्स्पिरेसी के तहत फर्जी केसों में अंदर डाला जा रहा है। हमको उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। वरना देखिए, मैं आपके लिए नहीं सोच सकता हूँ, आपको आपके लिए ख़ुद ही सोचना पड़ेगा। आज ये हैं, कल मैं हो सकता हूँ, परसों आप हो सकते हैं। शुक्रिया। तुम गोलियों से हमें मार ज़रूर सकते हो, तुम गोलियों से हमें मार ज़रूर सकते हो, मगर गोलियों से हमन मर जाए ऐसा ज़रूरी नहीं। तुम गोलियों से हमें मार ज़रूर सकते हो, मगर गोलियों से हमन मर जाए ऐसा ज़रूरी नहीं। ऐसा ज़रूर है कि मौत से हमन खौफ खाता है। ऐसा ज़रूर है कि मौत से हमन खौफ खाता है, मगर खौफ खा के हमन डर जाए ऐसा ज़रूरी नहीं। मगर खौफ खा के हमन डर जाए ऐसा ज़रूरी नहीं। मैं आदम और हव्वा की संतान, मैं आदम और हव्वा के संतान, मेरा मादरे वतन हिंदुस्तान, मोहम्मद मेरा नबी, अल्लाह मेरा खुदा, अम्बेडकर मेरा शिक्षक, बुद्ध मेरा शुरू, नानक मेरा गुरु, अमन मेरा मजहब, इश्क मेरा ईमान। मैं खौफ खा के डर जाने से, बेमौत मारे मर जाने से इनकार करता हूँ। मैं खौफ खा के डर जाने से, बेमौत मारे मर जाने से इनकार करता हूँ। और मैं जुल्म से इनकार करता हूँ। मैं जुल्म से इनकार करता हूँ कि जुल्म से इनकार करना इनकलाब की ओर बढ़ा हुआ पहला कदम है। मैं जुल्म से इनकार करता हूँ कि जुल्म से इनकार करना इनकलाब की ओर बढ़ा हुआ पहला कदम है। मैं कदम पीछे हटाने से इनकार करता हूँ। और मेरी जान का फैसला 7 घंटे की एक संसद सत्र से हो, मुझे मंजूर नहीं। मेरी जान का फैसला 7 घंटे की एक संसद सत्र से हो, मुझे मंजूर नहीं। मेरी पहचान का फैसला किसी पहचान पत्र से हो, मुझे मंजूर नहीं। मैं ऐसे संसद सत्र से, मैं अपने पहचान पत्र से इनकार करता हूँ। मेरे ही वतन में मुझे हक के बजाय भीख दिया जाए, मुझे मंजूर नहीं। मेरे ही वतन में मुझे हक के बजाय भीख दिया जाए, मुझे मंजूर नहीं। मुझे किसी नाम की तरह किसी रजिस्टर पर लिख दिया जाए, मुझे मंजूर नहीं। मैं हक के बजाय भीख दिए जाने से, किसी नाम की तरह किसी रजिस्टर पर लिख दिए जाने से इनकार करता हूँ। और ये आखिरी मिसरा है कि ज़ख्म को फूल कहूँ, ज़ख्म को फूल कहूँ, जालिम को रसूल कहूँ,
ज़ख्म को फूल कहूँ, जालिम को रसूल कहूँ, कर्फ्यू को जमहूरियत, नफ़रत को उसूल कहूँ। ज़ख्म को फूल कहूँ, जालिम को रसूल कहूँ, कर्फ्यू को जमहूरियत, नफ़रत को उसूल कहूँ। जो झूठ को सच कहे, जो झूठ को सच कहे, मैं ज़बान की हर एक ऐसी हरकत से इनकार करता हूँ। जो झूठ को सच कहे, मैं ज़बान की हर एक ऐसी हरकत से इनकार करता हूँ, और मैं जुल्म से इनकार करता हूँ कि जुल्म से इनकार करना इनकलाब की ओर बढ़ा हुआ पहला कदम है। मैं कदम पीछे हटाने से इनकार करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। Hi, I am Akhu from the band Imphal Talkies. I'm from Manipur. I'm very glad to be part of Justice Rocks, unsponsored by the police forces across the globe. I'll start with a song called Mr. President is Coming. This is a song I wrote sometime in 2013. I got beaten up by the Manipuri police. I'll tell you the story behind the song. I happened to be in a corner of Imphal, and the next day, Indian President Mr. Pranab Mukherjee was supposed to come to town, and Imphal is already a very militarized zone, and every time a big shot comes, then the militarization got it gets more militarized, and we happen to be in a place called Mahabali. Manipur is a dry state, and but it's the wettest dry state. You get booze everywhere, So I happen to be out with a friend. I mean, we are not drinking. We did not even get drunk. We have not even we were not doing anything. The police started hitting me. I think out of frustration. I don't know why, but that's been happening in Manipur. So this is a song I wrote, and then I tell my friends every time I play this song outside Manipur that this is a song, if you love drinking, if you love to know, the local brew here, so you have to know this song. It's like a tour guide book for the tourists, So it has all the name of the places in Manipur where you get good local liquor made out of rice. So this is called Mr. President is Coming. Shall we go to Kakulong? Shall we go to Kaisamthong? Shall we go to Mahabali? Shall we go to Musikun? Shall we go to Sekmai? Shall we go to Fayeng? Shall we go to Kakulong? Shall we go to Kaisamthong? Shall we go to Mahabali? Shall we go to Musikun? Shall we go to Sekmai? Shall we go to Fayeng? They say, don't go out, Mr. President is coming. They say, don't go out, Mr. President is coming. The nights we know are dark, the days we survive are bloody. How can you ask me not to drink? The nights we know are dark, the days we survive are bloody. How can you ask me not to drink? Shall we go to Ragailong? Shall we go to Ramji? Shall we go to Sangapam? Shall we go to Shanghai Puru? Shall we go to Kaiku? Shall we go to Andro? Shall we go to Ramji? Shall we go to Ragailong? Shall we go to Sangapam? Shall we go to Shanghai Puru? Shall we go to Kaiku? Shall we go to Andro?
They say, don't go out, Mr. President is coming. They say, don't go out, Mr. President is coming. The nights we know are dark, the days we survive are bloody. How can you ask me not to dream? The nights we know are dark, the days we survive are bloody. How can you ask me not to dream? Hello, Mr. President. Hello, Chief of the Army. Every time you come, you bring curfew. Hello, policeman in the street. Hello, man in green. This is my song for you, sing with me. The nights we know are dark, the days we survive are bloody. How can you ask me not to dream? Next, I'll play a song called Kutuminar. So I'll tell you, how the brutality of the police forces began in Manipur. So when we were growing up, I'm talking about 90s. First of all, I want to say in Manipur there's a draconian act called Armed Forces Special Powers Act, 1958, AFSPA. So Manipur has been living under this act, for a long time, and this this act gives the army and the paramilitary forces to kill anyone over mere suspicion. They can just think you are a terrorist or you are carrying a gun, and then they can just kill you, and then they can explain later. Oh, I thought he was a terrorist, or he was a threat to the army or anyone, to the state or to the country, and they can just kill you like that. So in 90s that was happening, and it passed on. So I think in late 90s, it started like the state police started working with the army and then doing what do you call operations, in the name of counterinsurgency, and then so the police started doing the same thing, which used to be a practice for the army and the paramilitary forces. So slowly the power, the brutality, how to brutalize the common people, your own people, it was the power, it kind of consciously or unconsciously transferred to the state forces, state police. So I mean that's how I feel, and then they started doing fake encounters and all. So it's been so right now in the Supreme Court there are there are 1,528 fake encounter cases piling up. The cases nothing has no justice has been ever delivered to the victims, the families and all. So it's one thing. So when you talk about police brutality in a place like Manipur, you can't just talk about the police. There's a relation between how the police functions with the army, and how the army functions with the police and with the government. These are all like interlinked. So this is a song called Kutuminar. It's a song against Armed Forces Special Powers Act. It's a song written sometime in 2010, I think, and the song talks about a guy who takes away from Delhi Kutuminar, who takes away Kutuminar from Delhi, and takes it back home to Imphal. And it's a story about this guy how he carries Kutuminar, all along the way, with this train called Abad Assam. Abad Assam is like the what do you call slowest train. So when the guy reaches Manipur, with the Kutuminar,
the chief minister turned up and asked the guy, what the hell you are doing with the Kutuminar in Delhi? The oppositions are blaming that, Manmohan has gifted Kutuminar to Obama. I mean, I'm talking about those Congress days. Okay, the song was written back then. So, so the guy says like, Delhi can get Kutuminar back only after they repeal Armed Forces Special Powers Act from Manipur. So that was his bargain. And what I want to tell with the song is, Kutuminar represents the Indian civilization. It's a monument, that represents, India in some way. So, Delhi will wake up one day and then you won't find Kutuminar, in Delhi. So then how does Delhi feel, to wake up so empty without Kutuminar? So that's exactly what the Armed Forces Special Powers Act, does to the people of Manipur and other places in Northeast and Kashmir, it snatched away people that you love, your family members, your husband, your brother, your sister, your wife, so it's a song about that. So it's a song in Manipuri, so that's why I'm taking a long time to explain. Ahing nong yai ateng bening Delhi ser gi lai rem bi mamilau bi manaton tum bi tum kare Ai da khalli Kutuminar phuk da bayade pu da bayade yung da bayade samu makonga Phuk da na pui airport da mon hai pup ngamoy tham ngamoy yam na chawi sagi na saksu lai rumali dandi Railway station dam pui sakthi kun be train bersama hai Jalpaiguri bhau dingam ni puge Sarap kalen ginung sa da train jeli tek koina mabukang bilin ko may kuwa wa karduna Bihari or patangai hako thai long mi sing chat minnai birimam ching minnai long mi sing na nong ma bu ngai hoi awabani kuchu na khai de jati na khai de yaning ram sa Jalpaiguri or padamay taylong sasakta ke matagong Kutuminar kokthong nadong lai ay na kunsi isay nganglang ay na lai Brahmaputra turil na imang daleblang bada Nigsing ay adunay gi Hanuman Kurya na Kutuminar bay Kuron iroy na lai ay na kongkwa mabumaga Sang jungle faurok pada kwa thabi mayang isay na ay thamoy riyay Nungsi bagi isay awa bagi isay marol kangresu ay thamoy da fawi ay diwara ki kabini Mau ke yor pada moy na heni pa sri karino yam na chawi shangi ay na hai Manipur in ma swing da macha mayam thak de ang wari tuna au shu na bashuni Shek mayor pada ngau mahigay gaway na ringay Amu bakar kung taray ko'y lebak Chief Minister Ibo B Marhay heni pa ng tong si Karino Deli
sarkar kaigadaure opposition hai Manmohan Obama na Kutuminar ko bigre ain hai laura bayani moina Kutuminar afspan manipur dai lokokraban tungda adu koina tonungba madilay pashmang ton hawa tabido pande hai na imana financial bibligin pale adu na Kutuminar su samu bongda financial birga yungge khalli ai Chao shangad na panabu pakaling Thank you. The next song is called Lullaby. It's a song we wrote, way back in late 2000, but we recorded in 2013, and it's a song dedicated to all the children in conflict zones. That's how we grew up, amidst blank fire, firing guns and protesting against the establishment. Bloodsock streets, that's my ground, that's where I played around. Sound of gunshot, that's my
Thank you. I'm here to extend my deep solidarity with our sisters and brothers who are fighting for justice against all forms of violences, but more particularly the police brutality that has been unleashed upon the citizens. I am especially alarmed by the unfortunate news that came from the land of the Dravidians, the land of Tamils, who promised us social justice. However, the minority treatment met by the police under their custody, having the death of two, Jairaj and Benix, comes to us as rather shocking. It has also shaken our consciousness about how social justice is compromised when it is entrapted with the Brahminical agenda of Hindu Rashtra and the neoliberal agenda of the Banyas. It is in this spirit we, the people who have been oppressed in this country for more than 3,000 years, look at such incidents as growing to our own peril. Currently, the India's police reform deserves special attention. We have right now 55% of under trials that belong to the scheduled caste, scheduled tribe and Muslim communities, which in total constitute less than 40%. These are the kind of circumstances that we undergo. Dalits in India particularly have a very huge stake in police reform as well as Adivasis. Talking about Tamil Nadu, the excellent reporter of the New Indian Express, Kritika Srinivasan, has time and again told us through her reportage about the violence committed upon Adivasis in Tamil Nadu. And so does we have seen similar form of violences implicated on the Dalit as well as other minority communities, in this case the Christians. We have to look at these issues where a majoritarian ideology is now trying to implicate all of us into this. And when they do it, they don't see the religion of the person or the caste of the person. For them, an oppressed comes with one tag. That is, the person needs to be crushed, and crushed for good. Therefore, it is in this spirit I want to extend again once more my love and affection to the family of the bereaved individuals, the bereaving family, as well as the other people, especially with regard to the Delhi violence that happened recently to our memory, and various other incidents which are unfortunately not reported. I stand with you and in on all the spirits convey to you a warm Jai Bhim. Some months ago, Jairaj and his son Benix were mercilessly thrashed and eventually beaten to death by the police for the so-called offense of keeping a shop open during lockdown, which would have otherwise invited only up to 3 months in jail. Sadly, the police were not the only guilty party in their deaths. Before they died, the police sought to extend their custody, which a judge granted mechanically without seeing the accused or questioning the rationale for the extension. All this is a sign that we are living with a completely broken system of law enforcement. The Tamil Nadu police is notorious for its torturous methods, but this is really not restricted to the state. Torture is integral to police culture all over India. Indeed, in some investigations, such as terror cases, torture is treated as the centerpiece. Many current laws facilitate such torture, such as the Terrorist and Disruptive Activities Prevention Act and the older Prevention of Terrorism Act, which continues refurbished as the Maharashtra Control of Organized Crime Act. The only solution lies in a stringent legal framework aligned with principles of international law under the UN Convention on Torture and a watertight enforcement mechanism. Although India signed the convention in 1997, it is yet to ratify it.
A weak torture bill was allowed to lapse by the UPA government, and the Supreme Court has rejected multiple petitions requesting that the government be urged to make a torture law. In both glorious jurisprudence and its efforts to aid in making the law in the past. The story of the torture law reveals a betrayal of the people by successive governments. There have been opportunities for 23 years to enact a law, but these have been avoided. Clearly, all governments enjoy the status quo, where the police are used as a tool for self-preservation. As disheartening as this may seem, all is not lost. There is much inspiration around us, such as the Black Lives Matter movement, which started a national debate in the US on policing. We need a people's movement at home too, to bring about necessary legislative changes that encourages institutions to end torture culture. The bar, the media, civil society, and students groups, each of these have relevant roles to play in bringing about the change we want to see. It is merely a matter of who decides to pick up the mantle first. Thank you. हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है जो लोहे अज़ल में लिखा है हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे हम देखेंगे അനീതികൾ നെടുമലപ്പഞ്ഞി പോലെ തുലാമഴയേറ്റവ വീഴുമ്പോലും അനീതികൾ നെടുമലപ്പഞ്ഞി പോലെ തുലാമഴയേറ്റവ വീഴുമ്പോലും അധികാരം എന്നും അലങ്കാരം അല്ല ജനങ്ങൾ എന്നും യജമാനന്മാരുറപ്പല്ലേ നമ്മൾ കാണേണ്ടേ हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे हम देखेंगे ಕರುಣೆಯ ದೇವರು ಆದಾಗ ಕರುಣೆಯ ದೇವರು ಆದಾಗ ಆ ದೇವರು ಗುಡಿಯಚೆ ನಡೆದಾಗ ಕರುಣೆಯ ದೇವರು ಆದಾಗ ಆ ದೇವರು ಗುಡಿಯಚೆ ನಡೆದಾಗ ತಳ್ಳಿಸಿಕೊಂಡ ನಮಗೆಲ್ಲ ಆ ದೇವರ ಸನಿಹ ಸಿಕ್ಕಾಗ ತಳ್ಳಿಸಿಕೊಂಡ ನಮಗೆಲ್ಲ ಆ ದೇವರ ಸನಿಹ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಗದ್ದಿಗಳೆಲ್ಲ ಉರುಳೋದ ಗದ್ದಿಗಳೆಲ್ಲ ಉರುಳೋದ ಅಧಿಕಾರಗಳು ನೆಗೆದು ಬೀಳೋದ ನೋಡೋನೆ ನಾವು ನೋಡೋನೆ हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे हम देखेंगे ஆண்டவன் பெயரே நிலைத்திருக்கும் ஆண்டவன் பெயரே நிலைத்திருக்கும்
அது மறைந்திருக்கும் எங்கும் நிறைந்திருக்கும் ஆண்டவன் பெயரே நிலைத்திருக்கும் அது மறைந்திருக்கும் எங்கும் நிறைந்திருக்கும் காட்சியும் அதுவே காண்பதுவும் உள்ளொளியின் உண்மை முழக்கமாகும் உள்ளொளியின் உண்மை முழக்கமாகும் அது உன் உள்ளே என் உள்ளே படைப்புயிர் எல்லாம் எழுந்து நிற்கும் அதில் நீயும் தான் நானும் தான் பார்ப்போமே நவுனோடோனே നമ്മൾ കാണേണ്ടേ हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है जो लोहे अज़ल में लिखा है हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे हम देखेंगे हम देखेंगे हम देखेंगे This song is a reflection of society today. It addresses many of the issues within the system, like abuse of power, lack of justice, corruption, and peels the layer of man who's beneath the uniform. It also addresses the various different emotions that we as the common people go through, the rights that we have, the importance to speak up and to highlight these issues to bring about systemic change. மனிதன் மனதின் ஆழத்தில் அரக்க குணங்கள் தூங்குது மனிதன் மனதின் ஆழத்தில் அரக்க குணங்கள் தூங்குது மனிதன் மனதின் ஆழத்தில் அரக்க குணங்கள் தூங்குது அதிகாரம் சேரும்போ வேகமாதான் சீருது மனிதன் மனதின் ஆழத்தில் அரக்க குணங்கள் தூங்குது அதிகாரம் சேரும்போ வேகமாதான் சீருது சமாதான வேதமெல்லாம் தாண்டித்தான் ஓடுது சமாதான வேதம்
தவிரத்தான் மனுஷன் முயலுறான். நரி காட்டுல முயல் கணக்கா ஓடி ஓடி ஒளியறான். நரி காட்டுல முயல் கணக்கா ஓடி ஓடி ஒளியறான். காடு பூரா நரி இருக்கு, புல்லு பூரா பொறி இருக்கு. காடு பூரா நரி இருக்கு, புல்லு பூரா பொறி இருக்கு. சட்டம் பூரா ஓட்டானு நீதி நம்ப போகிறான். நீதி நம்ப போகிறான். நீதி நம்ப காக்கி சட்ட என்பரி காசு தோள்பட்ட சாரும் என்பரி காசு. காக்கி சட்ட என்பரி காசு தோள்பட்ட சாரும் என்பரி காசு. உள்ளடி தோட்டா என்பரி காசு. உள்ளடி தோட்டா என்பரி
This next song asks for peace to prevail in this world. It speaks about the importance of moral values and good character and the need for inner strength, compassion and unity during these very difficult times. Shanti nilava vendum. சாந்தி நிலவ வேண்டும், சாந்தி நிலவ வேண்டும், எங்கும் சாந்தி நிலவ வேண்டும், எங்கும் சாந்தி நிலவ வேண்டும், உலகிலே சாந்தி நிலவ வேண்டும், உலகிலே சாந்தி நிலவ வேண்டும், ஆத்ம சக்தி ஓங்க வேண்டும், உலகிலே சாந்தி நிலவ ஆத்ம சக்தி ஓங்க வேண்டும், உலகிலே சாந்தி நிலவ வேண்டும், ஆத்ம சக்தி ஓங்க வேண்டும், உலகிலே சாந்தி நிலவ காந்தி மகாத்மா கட்டளை அதுவே, 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 கருணை ஒற்றுமை கதிரொளி பரவி சாந்தி நிலவ வேண்டும், காந்தி மகாத்மா கட்டளை அதுவே, கருணை ஒற்றுமை கதிரொளி பரவி சாந்தி நிலவ வேண்டும், ஆத்ம சக்தி ஓங்க வேண்டும், உலகிலே சாந்தி நிலவ வேண்டும், கொடுமை செய்தியோர் மனம் அது திருந்த, கொடுமை செய்தியோர் மனம் அது திருந்த, நற்குணமது புகட்டிடுவோம், கொடுமை செய்தியோர் மனம் அது திருந்த, நற்குணமது புகட்டிடுவோம், மடமை அச்சம் அறுப்போம், மக்களின் மாசிலா நல்லொழுக்கம் வளர்ப்போம், மடமை அச்சம் மறுப்போம்,
மக்களில் மாசிலா நல்லொழுக்கம் வளர்ப்போம். திடம் தரும் அஹிம்சா 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 திடம் தரும் அஹிம்சா யோகினம் தந்தை ஆத்மானந்தம் பெறவே திடம் தரும் அஹிம்சா யோகினம் தந்தை ஆத்மானந்தம் பெறவே கடமை மறவோம் கடமை மறவோம் அவர் கடன் தீர்ப்போம் கலங்கமில் அறம் வளர்ப்போம் கடமை மறவோம் அவர் கடன் தீர்ப்போம் கலங்கமில் அறம் வளர்ப்போம் எங்கும் சாந்தி நிலவ வேண்டும் ஆத்ம சக்தி ஓங்க வேண்டும் உலகிலே சாந்தி உலகிலே சாந்தி உலகிலே சாந்தி நிலவ வேண்டும் எங்கும் சாந்தி எங்கும் சாந்தி எங்கும் சாந்தி Hello, I'm Amitabh Ghosh, and I'm very glad to join the Justice Rocks Festival. I'm going to read a few lines from a poem by my friend, the late Kashmiri poet Agha Shahid Ali. The poem is called Farewell. At a certain point, I lost track of you. They make a desolation and call it peace. When you left, even the stones were buried. The defenseless would have no weapons. My memory is again in the way of your history. Army convoys all night like desert caravans. In the smoking oil of dimmed headlights, time dissolved. All winter, it's crushed fennel. We can't ask them, are you done with the world? Thank you. Hello, my name's Samura, and this song is called Hold That Weight. It's dedicated to all our nurses, all our essential workers, everybody out there who is being so courageous, continuing on. We love you, and we will support you. Came upon a man who carried in his
He asked if I could spare a pair of my walking shoes to help him climb the hills that still lay in his life. Something he could wear to carry his cares. Hold up his iron will, a day maybe tomorrow. He wanted to lay down. He wanted to test the ground. I placed myself at his feet and said, whatever you need. He said, practice what you preach. Yes, I will hold that weight. I'll hold that weight for you. Yes, I will hold that weight. I'll hold that weight for you. I came upon a man who carried in his fist all of the violence that happened to him. Through many a day, he locked it away and hardened his flesh like no weapon could prosper. They put him in a cage and said it was his fate to ride with the rest, but he got out in 8. He puts on a mask now to cover his rage, 'cause red and blue lights might look twice and bring the chopper today. He wanted to break down. He wanted to touch the ground. I said, how do we defeat that state that do evil deeds? He said, practice what you preach. I said, how do we defeat that state that do evil deeds? He said, practice what you preach. Yes, I will hold that weight. I'll hold that weight for you. Yes, I will hold that weight. I'll hold that weight for you. Yes, I will hold that weight. I'll hold that weight for you. Yes, I will hold that weight. I'll hold that weight for you. Yes, I will hold that weight. I don't know if it holds two. I had daydreams, ways of freedom, what it might be. Lately, I see working ways out. Thank you. The next song I'm going to play is a song entitled Kill War. This is a song I just released along with the first song I played, Hold That Weight. Those are both on a new project called the Black Spring EP. And this project is about this moment in time, not just this exact moment, but just the last year of what's been happening. And I wrote this song Kill War in January, just as a resistance to the constant warmongering, constant fear-mongering that we see is happening all the time in our country and around the world. And as a question of who exactly is being forced to fight in these wars rather than schedule them and put us up for them. And also, what does it look like to have anger, have violence from trauma in all type of different ways, and have that feel like a certain type of war. So this song is called Kill War. Hey, hey, haven't you heard? It's time to go to
pain I have inside me. What else can I do but kill the things that seem alive? Give me a weapon, give me a couple lessons. I can't even feel it anymore. Who's fighting? Who's dying? Who's dying for the cause? Who's fighting? Who's dying? Who's dying for the cause? Hey, hey, haven't you seen our people on TV? They killed one of our sons. How can we make them bleed? What else can I do with all this rage you put inside me? How else can I move but with the lessons you provide? Solve my depression. Now I'm a lethal weapon. I can't even feel it anymore. Who's fighting? Who's dying? Who's dying for the cause? Who's fighting? Who's dying? Who's dying for the cause? Cut out all my thoughts. Focus on the gun. All the things we bought. Need the things we've done. Death is very cheap on the moving screen. But you can't feel that loss. If you can't feel that God is so cold. I feel water in my eyes. Who's dying? Who's fighting? Who's dying for the cause? Who's fighting? Who's dying? Who's dying for the Who's fighting? Who's dying? Who's fighting? Who's fighting? Who's dying? Who's dying for the cause? There's some things that I don't want to admit, so I try not to think about it. So there's
I just hope to the Lord I don't slip. You feel me? So there's some things that I don't want to admit. So I try not to think about it. There's a lot of ugly things in my heart. I just hope to the Lord I don't slip. I wonder what it's like to let it out. That part of me that I'm so afraid. It holds on me and tosses me about life. Doesn't seem to be something I get away from. Tell me, how do you name those well-kept secrets that you never say out loud? And why does the body see these demons but keep me from calling out? I guess I'll just say it's a process, one day at a time. There have been weeks when I already lost it, but I came back every time. So there's a whole entire world that I've created in my mind, and it's so much more real than the one I see outside. I've populated it with people who can see that I'm no good, and who know all the best places where I can go to hide. And I'm haunted by the ghost of my best friend who just left me to head to the next world. But I'd like to believe it's the West End with a room full of art and his best girl. And it's positive that I could feel him, but I don't know if I took advantage of the times he was right in the next room, cause my pain was such I couldn't stand it. Tell me, how do you name those well-kept secrets that you never say out loud? And why does the body see these demons but keep me from calling out? I guess I just say it's a process, one day at a time. There have been weeks when I already lost it, but I came back every time. When you ask me what's wrong, you might think I don't hear you, but that's not the case. I just might not respond, I don't want to be near you, cause I'm so ashamed. I just keep the TV on and just let it wash over all of these many fears, and hope I'll wake up less weary tomorrow morning, and hope I'll wake up less weary tomorrow morning. Please God, hope I wake up less weary tomorrow morning. Guess I just say it's a process. Guess I just say it's a process. Guess I just say it's a process, one day at a time. There have been weeks when I already lost it, but I came back every time.
guess I'll just say it's a process. Guess I'll just say it's a process. Guess I'll just say it's a process. One day at a time. There have been weeks when I already lost it. I guess I'll just say it's a process. I guess I'll just say it's a process. One day at a time. There have been weeks when I already lost it. I guess I'll just say it's a process. I guess I'll just say it's a process. One day at a time. There have been weeks when I already lost it, but I came back every time. Yes, I came back every time. Thank you again for being with me. Again, my name is Samara Pender Hughes, and I'll see you next time. Greetings to everybody watching. I would like to present to you a few chosen but disconnected verses from Sahir Ludhianvi's epic poem Parchhaiyan, which was written a very long time ago, but still carries an eerie resonance for our times. Because in the poem he addresses his beloved, people assume it's a romantic poem, and Sahir is a romanticist. But the truth is that any poet with a revolutionary approach must be a romanticist. Sahir's revolutionary approach is as relevant today as it was 7 decades ago when he wrote Parchhaiyan. And today, in a world when society is being divided sharply along religious and political lines, it is Sahir's lines that are worth recalling, his warnings worth heeding. His words may perhaps offer a salve for our own pain, and maybe through his writing we can help build a collective consciousness. The poem is in Urdu. It's called Parchhaiyan, Shadows. जवां रात के सीने पे दूधिया आंचल मचल रहा है किसी ख्वाब मरमरी की तरह. हसीन फूल, हसी पत्तियां, हसी शाखें लचक रही हैं किसी जिस्म नाज़नी की तरह. फिजा में घुल से गए हैं उफ़क़ के नर्म खतूत. ज़मी हसी है ख्वाबों की सरज़मी की तरह. तसव्वुरात की परछाइयाँ उभरती हैं कभी गुमान की सूरत, कभी यकीन की तरह. वो लम्हे कितने दिलकश थे, वो घड़ियाँ कितनी प्यारी थीं. वो सहरे कितने नाजुक थे, वो लड़ियाँ कितनी प्यारी थीं. बस्ती की हर एक शादाब गली ख्वाबों का जजीरा थी गोया. हर मौज नफस, हर मौज सवा नगमों का ज़ख़ीरा थी गोया. बस्ती पे उदासी छाने लगी, मेलों की बहारें ख़त्म हुईं. आमों की लचकती शाखों से झूलों की कतारें ख़त्म हुईं. धूल उड़ने लगी बाज़ारों में, भूख उगने लगी खलियानों में. हर चीज़ दुकानों से उठकर रूपोश हुई तहखानों में. बदहाल घरों की बदहाली बढ़ते बढ़ते जंजाल बनी. महंगाई बढ़कर काल बनी, सारी बस्ती कंगाल बनी. इफलास ज़दा दहकानों के हल बैल बिके, खलियान बिके. जीने की तमन्ना के हाथों जीने ही के सब सामान बिके. कुछ भी न रहा जब बिकने को,
जिस्मों की तिजारत होने लगी। खलवत में भी जो ममनू थी वो जलवत में जसारत होने लगी। सूरज के लहू में लिथड़ी हुई वो शाम है अब तक याद मुझे। चाहत के सुनहरे ख्वाबों का अंजाम है अब तक याद मुझे। उस शाम मुझे मालूम हुआ खेतों की तरह इस दुनिया में सहमी हुई दोशीज़ाओं की मुस्कान भी बेची जाती है। उस शाम मुझे मालूम हुआ इस कारगहे जरदारी में दो भोली भाली रूहों की पहचान भी बेची जाती है। उस शाम मुझे मालूम हुआ जब बाप की खेती छिन जाए ममता के सुनहरे ख्वाबों की अनमोल निशानी बिकती है। सूरज के लहू में लिथड़ी हुई वो शाम है अब तक याद मुझे। चाहत के सुनहरे ख्वाबों का अंजाम है अब तक याद मुझे। चलो कि आज सभी पायमाल रूहों से कहें कि अपने हर एक जख्म को जवां कर लें। चलो कि आज सभी पायमाल रूहों से कहें कि अपने हर एक जख्म को जवां कर लें। हमारा राज हमारा ही नहीं सभी का है। चलो कि सारे ज़माने को राज़दां कर लें। चलो कि चल के सियासी मुकामिरों से कहें कि हमको जंग व जदल के चलन से नफ़रत है। जिसे लहू के सिवा कोई रंग रास न आए हमें हयात के उस पैरहन से नफ़रत है। कहो कि अब कोई कातिल अगर इधर आया तो हर कदम पे ज़मीं तंग होती जाएगी। हर एक मौज हवा रुख बदल के झपटेगी। हर एक शाख रगे संग होती जाएगी। कहो कि अब कोई ताजिर इधर का रुख न करे अब इस जगह कोई कुंवारी न बेची जाएगी। ये खेत जाग पड़े हैं उठ खड़ी हुई फसलें अब इस जगह कोई कियारी न बेची जाएगी। ये सरजमी है गौतम की और नानक की। इस अर्ज़ पाक पे वहशी न चल सकेंगे कभी। ये सरजमी है गौतम की और नानक की। इस अर्ज़ पाक पे वहशी न चल सकेंगे कभी। हमारा खून अमानत है नस्ल नौ के लिए। हमारे खून पे लश्कर न पल सकेंगे कभी। कहो कि आज भी हम सब अगर खामोश रहे। कहो कि आज भी अगर हम सब खामोश रहे तो इस दमकते हुए खाकदां की खैर नहीं। जुनू की ढाली हुई एटमी बलाओं से ज़मीं की खैर नहीं आसमां की खैर नहीं।
Hi, my name is Ganavia. And my name is Rajna. Thanks for tuning into Justice Rocks. The short poem that we just performed right now is from the Basque country. It's a very old language and was a poem that was popularized by the guitarist and singer Miquel Laboa. And the rough translation is as follows, which is, if I had clipped its wings, it cannot fly away from me, but then if I had clipped its wings, it would no longer be the bird that I love. Over time, this poem became an anthem for certain movements in anti-fascism. The next piece that we're going to perform is called From Shadows to the Stars, that some of you may recognize as a phrase that can be found in Rohit Vemula's last letter to the world. It's in quotation marks even in the letter. The song that we're about to perform, all of the words were taken from that letter. I feel a growing gap between my soul and my body. The value of a man was reduced to his nearest possibility. Never was a man treated as his mind, a glorious thing made of stardust. It has become truly difficult to love without getting hurt. Maybe I was wrong all the while in understanding
We are all deeply alarmed by stories of police brutality that we have seen. But we are also deeply alarmed about the general levels of violence and brutality in society. The police are a part of society. If we blame the police, it is perhaps not correct, because the police are buffeted by so many political forces. They are badly paid, they are not given counseling. What is needed is major police reforms so that psychological training, sensitivity training can be given to them and to the rest of society. We all need to move away from violence and to move towards compassion. I hope that this is the moment that we can actually start a process that will take us closer towards a more calm, compassionate, and serene society. All violence is wrong. All violence needs to stop. Hi, Vanakkam. My name is Arivu. I would like to perform a song #Justice. #Justice, who is the குற்றவாளிஸ்? #Justice, அடிச்சு கொள்ளும் போலீஸ். #Justice, அடுத்து யார் victim? #Justice, தடுக்க ஏது சட்டம்? #Justice, who is the குற்றவாளிஸ்? #Justice, அடிச்சு கொள்ளும் போலீஸ். #Justice, அடுத்து யார் victim? #Justice, தடுக்க ஏது சட்டம்? பழைய போய் நமது நண்பன் என்று சொல்லும் காக்கி மேல வைக்கும் கை, பணத்தை வை, பெரிய வெள்ள வேட்டி வந்த வணக்கம் வை, பார்த்து செய், எதன கேள்வி கேட்ட தூக்கி உள்ள வை, தொடங்கு வன்முறை, காரணம் விசாரணை, கதறி கெஞ்சி கேட்டு மாறவில்லை மனநிலை, பதவி ஆணவத்து ஈரமற்ற படுகொலை, எதிரியாய் நிறுத்தி ஏதுமற்ற மக்களை மரண வேதனைக்குள் பூட்டி வைத்த காக்கி சட்டை. லாக்டவுன் ஃபார் திஸ் கொரோனா, இந்த லாக்அப் கொலைகள் நியாயம் பெறுமா? பிளாக் லைவ்ஸ் போல ஆரானா, நம் நாடும் இனிமேல் ஒன்றாய் எழுமா? லாக்டவுன் ஃபார் திஸ் கொரோனா, இந்த லாக்அப் கொலைகள் நியாயம் பெறுமா? பிளாக் லைவ்ஸ் போல ஆரானா, நம் நாடும் இனிமேல் ஒன்றாய் எழுமா? முடிய பார்த்து கலரை பார்த்து எடைய போடும் புத்தி, அந்த வெறியும் கூடி மிருகமான கொலைகள் செய்யும் லத்தி, உரிமைக்காக இணையும் நேரம் ஆயுதங்கள் தாக்கும் எங்கள் உடைமை பற்றி எரியும் போது வேடிக்கைதான் பார்த்து நிற்கும் ஒரு புறம், ஊரடங்க மறுபுறம் போர் தொடங்க சாதி என்ற நோயில் கூட பல உயிர்கள் போகுது இந்த நாதியற்ற நாட்டுக்குள்ள. நீதி கேட்டு அலைகிறோம், பாதி வாங்கி வருவதற்குள் மூச்சு நின்று சாகிறோம். மக்களை பிரித்து பிரச்சனை வளர்க்கும் ஆளும் வர்க்கம் தான், அது கட்டளை கொடுத்த பட்டனை எமக்கு காக்கி சட்டதா. மக்களை பிரித்து பிரச்சனை வளர்க்கும் ஆளும் வர்க்கம் தான், அது கட்டளை கொடுத்த பட்டனை எமக்கு காக்கி சட்டதா. இதனை புரிந்து கொண்டால் நீயும் இணைந்து கொள்வாய். மனித மாண்பு ஒன்றே இந்த பூமியின் தேவை, கடந்து சென்றால் நீயும் ஒதுங்கி கொண்டால் மீட்க யாரும் இல்லை, நீயே கொண்டு வா தீர்வை. லாக்டவுன் ஃபார் திஸ் கொரோனா, இந்த லாக்அப் கொலைகள் நியாயம் பெறுமா? பிளாக் லைவ்ஸ் போல ஆரானா, நம் நாடும் இனிமே ஒன்றாய் எழுமா? லாக்டவுன் ஃபார் திஸ் கொரோனா, இந்த லாக்அப் கொலைகள் நியாயம் பெறுமா? பிளாக் லைவ்ஸ் போல ஆரானா, நம் நாடும் இனிமே ஒன்றாய் எழுமா? Thank you. This song is anti-Indian. என்ன நான் உனக்கு ஆன்டி இண்டி, என்ன ஓட்டு போட்ட பச்சை தமிழ், என்ன நான் உனக்கு ஆன்டி இண்டி, என்ன உன்னை போலே நானும் மனிதன், என் ஆசைகளும் கனவுகளும் இனி மண்ணா. கண் மூடியின் கதையை கேட்டு கோடா நீ, எனது நாட்டை கெடுத்து போட்டாய், என் வீட்டை கொழுத பார்த்தாய், என் காட்டில் உன் வேட்டை, வரலாறெங்கு முன் சேட்டை, வெறியோடே கொன்றாய் வெளியாட்டை, செத்தோம் ஒரு நாடே வலியோடே, மொத்தம் பல லட்சம் இன்றோடே, இருந்தும் நான் வந்தேன் உன்னோடே, அடையும் கனவோடே என் வீடே, ஒன்றாயிருப்பதே என் ஆசை, ஒன்றாதிருக்கவே உன் பூசை, மொழியால் மதத்தால் இனத்தால் பிறப்பால் அறிவாலால் கொடுங்கோலால் பிரித்தாயே, உருநூலால் வெறுத்தாயே, நிறத்தாலே என்னை மொத்தம் தோண்டும் நிலமெங்கும் என் ரத்தம், தலைமுறையாய் தொடரும் நம் யுத்தம், புரியாது உனக்கு என் வலிகளின் அர்த்தம், நான் அந்த கதையின் மிச்சம். என்ன நான் உனக்கு ஆன்டி இண்டி, என்ன ஓட்டு போட்ட பச்சை தமிழ், என்ன நான் உனக்கு ஆன்டி இண்டி, என்ன உன்னை போலே நானும் மனிதன்.
ஐயோ இது கொடுமை, இனவாதம் இங்கொரு சிறுமை, பெருமைக்கென வாழ்வது வடமை, உன் தலைகணம் தூக்கி தூரத்தில் வைத்தமிழா. இங்கு எல்லோரும் சமமா, நிலம் எல்லாமே பொதுவா, நம் பண்பாடும் இதுவா, நாம் கேட்டு நிற்கிறோம் காவேரி தனியா இருக்குதே, நம் சேரி உயிரை பறிக்குதே, உன் கல்வி முடமா இருக்குதே, நம் கையில் உரிமை அதிகாரம் வெட்டுது வெங்காயம், அதை உரிக்க உரிக்க வெளுக்கும் சாயம், அரசாங்கம் விற்குது சாராயம், அதனால் இறந்தவன் ஏராளம், செல்லாது நீ 500, ஒரு கல்லாய் தமிழா நீ மாறு, எங்கே உன் ஆதாரு, அது இல்லா விட்டால் நீ யாரு, சும்மா குடுக்கிற ரேஷன் அரிசி கல்லா கிடக்குது பாரு, அலசி புள்ள படிக்கிற அரசு பள்ளி, அப்பன் குடிக்கிற கடைய தள்ளி, நீ கட்டும் வரிதான் வேண்டும், நீ சிந்தும் கண்ணீர் வேண்டாம், நீ என்பது ஓட்டு மட்டுமே, நாடு என்பதே ரேட்டு மட்டுமே, என்ன நான் உனக்கு ஆன்டி இண்டி, என்ன ஓட்டு போட்ட பச்சை தமிழ், என்ன நான் உனக்கு ஆன்டி இண்டி, என்ன உன்னை போலே நானும் மனிதன், என்ன நான் உனக்கு ஆன்டி இண்டி, என்ன ஓட்டு போட்ட பச்சை தமிழ், என்ன நான் உனக்கு ஆன்டி இண்டி, என்ன கண் மூடிய கதையை கேட்டு கோடா நீ, உலகெல்லாம் உன் சொந்தம், உதை வாங்கி திரிகிறே உன் பந்தம், பல பட்டம் வென்றாலும் பசியோடு வாடுதே நம் சொந்தம், மலரட்டும் தொடரட்டும் விடியட்டும் என சில வாய் மட்டும், மலவல்லும் தொழிலுக்கோ வர வேண்டும் இங்கொருவன் மட்டும், செலவழிக்கிற செலவுக்கு மாலை போட, தண்ணி மேல தப்பக்கோலை போட்டு மூட, ஸ்டெர்லைட் என மீட் என கொன்று விட்டு கையெடுத்து கும்பிடுற ஓட்டு போட, தமிழன் என சோதனை எலியா, தமிழர் பேசுகிற மொழியும் இந்தியா, கருப்பு பணம் திருப்பி தந்தியா, குடிசை எரிஞ்சதே நீயும் வந்தியா, இலவசங்களை கொடுக்கிற மயக்கிற அடிப்பட உரிமையை பறிக்கிற சிரிக்கிற, கலவரங்களை நடத்துற நாட்டுல கேள்வி கேட்டா தேச துரோகியா, மரணம் ஒரு தடவை கனவு தரும் அதனை விதையன விடுமதி மயக்கிடும் அது விதி இறுதி வரையுறுதி கொடுக்கும் எனது வழி எழுதும் ஒரு புதிய வரலாறு, இனி தேவையில்லை துயரம் பொறுத்திட முடியாது கொள்ளை இனியும் முடிவெறி யாதொரு வினை செய்தோம் பகுத்தறிவால் அதை சரி செய்வோம், என்ன நான் உனக்கு ஆன்டி இண்டி, என்ன ஓட்டு போட்ட பச்சை தமிழ், என்ன நான் உனக்கு ஆன்டி இண்டி, என்ன உன்னை போலே நானும் மனிதன், என்ன நான் உனக்கு ஆன்டி இண்டி, என்ன ஓட்டு போட்ட பச்சை தமிழ், என்ன நான் உனக்கு ஆன்டி இண்டி, என்ன உன் போல் ஒரு மனிதன் தானே நான் இங்கே. தேங்க்யூ. This song சண்டை செய்வோம், சண்டை செய்வோம் பாடா தமிழா, சண்டை செய்வோம் வீதிக்கு இறங்கி, சண்டை செய்வோம் ஒன்னா சேர்ந்து, சண்டை செய்வோம் உரிமையை பறிச்சா, சண்டை செய்வோம் வாடா தமிழா, சண்டை செய்வோம் வீதிக்கு இறங்கி, சண்டை செய்வோம் ஒன்னா சேர்ந்து, சண்டை செய்வோம் உரிமையை பறிச்சா, சண்டை செய்வோம். They call me அறிவு, நான் உங்க உறவு, ஈக்வாலிட்டி தாங்க என் கனவு, அம்பேத்கர் பெரியார் என்றைக்கும் அழியார், என் பாட்டை கொடுத்தது பகுத்தறிவு, ஜனநாயகம் அட சுதந்திர நாட்டுக்கு அதுதான் முகம், மனுஷனை மதிக்கணும் அதுதான் மதம், சமத்துவம் இருக்கணும் அதுதான் சட்டம், அரசியல் அமைப்புக்கு அடித்தளம், அதை சார்பின்மையை பறிப்பது மடத்தனம், அதனால் உண்மையை உரைப்பது அவசியம். யா பொதுமறை அமைதி பூமி இந்த வந்தாங்க, சிறு குலங்களாக நம்ம வாழ்ந்தோங்க, சிலர் குதிரை ஏறி இங்க வந்தாங்க, நம்ம தலையில் ஏறிக்கிட்டு நின்னாங்க, நிலங்களை பறிச்சு பலங்களையும் அழிச்சு, பரம்பரையா தொட மறுத்து, மதமா இனமா பிரிச்சா தனியா, அடுத்தவன் உழைப்புல கொழுக்கிற கதை தான் வரலாறு, அதை மறந்திட முடியாது யா சிறுபான்மை, அட உழைக்கிற இனம்தான் உலகம் முழுக்கவே பெரும்பான்மை, நம்ம பிரிஞ்சு கிடக்கிறோம் அது உண்மை, குறுக்குல புகுந்தவன் கழுத்தை நெரிக்கிறான், களத்துல இறங்குனா சுட்டு பொசுக்கிறான், யார் இங்க வாழணும், யார் இங்க ஆளணும், யார் இங்க குடிமகன், யார் இங்க இந்திய, யார் இங்க தமிழ, நான் யார் என்பதை நீ யார் சொல்ல, தாய் நாடு என்பது பிறப்பினில் இல்ல, நான் யார் என்பதை நீ யார் சொல்ல, தாய் நாடு என்பது பிறப்பினில் இல்ல, சண்டை செய்வோம் வாடா தமிழா, சண்டை செய்வோம் வீதிக்கு இறங்கி, சண்டை செய்வோம் ஒன்னா சேர்ந்து, சண்டை செய்வோம் உரிமையை பறிச்சா, சண்டை செய்வோம் வாடா தமிழா, சண்டை செய்வோம் வீதிக்கு இறங்கி, சண்டை செய்வோம் ஒன்னா சேர்ந்து, சண்டை செய்வோம் உரிமையை பறிச்சா. காமாட்சி மீனாட்சி நீ கேள்வி என்னாச்சு, தாய்நாடு கேள்விக்குறி ஆச்சு, நீ யாரு நான் யாரு ஓம்பாட்டை எந்தூரு தோண்டி எடுக்குமா என்ஆர்சி, ஆதாரு ஓட்டைடி எல்லாமே எதுக்கு, தாத்தாக்கு தாத்தாவை எழுப்பு, அறிவு இருக்கா அட அரக்கு இருக்கா, நீங்க அளக்குற கதையில பொருள் இருக்கா, உனக்கு இருக்கா இல்ல எனக்கு இருக்கா, இனி பிறக்கிற குழந்தைக்கு மதம் இருக்கா, குடியுரிமை அடிப்படை உரிமை, அதை பறிக்க நினைக்கிறது பெருங்குடுமை, மதவெறியை மொழி இனவெறியை இங்கு திணிக்க துடிக்கிறது பெருமடமை, இந்தியன் எல்லாம் இந்து இல்ல, இங்க இந்துக்கு முஸ்லிம் எதிரி இல்ல, ஒரு வந்தேரி என எவனும் இல்ல, இது நம் பூமி,
நம்மை பிரிக்குது CAA, அதை கேள்வி கேட்டு வரும் தாய்நாடே, அது நாளை நமக்கும் வரும் மறக்காதே, மதவாத பிரிவினையை ஏற்காதே, எல்லோரும் பூமிக்கு வந்தேறிதான் இந்த யுத்தத்தை நடத்துற வியாபாரி தான். சண்டை செய்வோம் வாடா தமிழா, சண்டை செய்வோம், வீதிக்கு இறங்கி சண்டை செய்வோம், ஒன்னா சேர்ந்து சண்டை செய்வோம், உரிமையை பறிச்சா சண்டை செய்வோம், வாடா தமிழா சண்டை செய்வோம், வீதிக்கு இறங்கி சண்டை செய்வோம், ஒன்னா சேர்ந்து சண்டை செய்வோம், உரிமையை பறிச்சா சண்டை செய்வோம். வணக்கம். Hi, this is Swara Bhaskar, and like all of you, I have also been very concerned by the growing number of reported cases of police brutality in our country, whether it was, the violence upon the CA-NRC protesters in Uttar Pradesh last year, or it was the role of the Delhi police in the riots in Delhi in February 2020, or the Jayaraj and Benix case in Tamil Nadu, which was quite horrifying. And honestly, abuse of power is not new. It is as old as, human civilizational structures, I guess. But when men and personnel in uniform betray their power, I feel it's a very different kind of pain for citizens like us, because I think that from our very childhood, our very social conditioning teaches us to trust the uniform, to see those who are in uniform as people who enable the rule of law. And when you see those people who have been charged with the maintenance of law and order contributing to breaking the law and order, it's a very different kind of betrayal and pain. And I think that it is our responsibility as citizens to remind the personnel in uniform, especially the police, every time they abuse that power. It is our job to remind them what their duty actually is. And so I'm very glad that Justice Rocks is making an effort in that direction. And I thought that I would also contribute to reminding the police about, who they really are and what their responsibility is. So I'm going to read a poem called Matmele Top Wali Nokri by a very talented poet by the name of Dipankar Giri. So this is Dipankar Giri's very, very powerful poem addressed to the police in our country. ये मटमैला टोप पहनकर तुम किससे डराते हो? ये मटमैला टोप पहनकर तुम किससे डरते हो? किसका सर है ये और किसका टोप? किसका है ये मटमैला राजमुकुट जिसे पहनकर तुम एक पल के लिए अपनी मूछें छोटी करवा लेते हो और अपनी बंदूक की नाल और ज़्यादा साफ कर लेते हो? तुम्हें अच्छा लगता होगा शायद ये रंग, इसलिए इसे पहनकर तुम बन जाते हो कुछ और, वो नहीं जो तुम हो, वो भी नहीं जो तुम बन सकते थे। जैसे कोई बच्चा कबाड़ी के कपड़े पहनकर खुद को इंसान नहीं कबाड़ समझने लगता है। तुम्हें ज़रूर अच्छा लगता होगा ये रंग, इसलिए तुम्हें जब जिसने जैसा टोप पहनने को कहा, तुमने बिना प्रतिरोध किए उसे पहन लिया। पर क्या इस टोप का रंग तुम्हारे चेहरे से मिलता है? इसका रंग उस बादल जैसा भी तो नहीं जिसको घुमड़ते उमड़ते देख तुम भाग निकलते थे नदी की तरफ और नदी के साथ भीगते थे अनवरत। इसका रंग तो उस रात जैसा है जब तुम अपने घर में चुपचाप सो रहे थे और वे तुम्हारे घर के चारों तरफ इकट्ठा हो गए थे। हाँ, इस टोप का रंग उस रात के रंग से मिलता है। जब तुम इस टोप को पहनते हो तब तुम्हारे लंबे लंबे बाल उसी कनपट्टी में छुप जाते हैं, बाल जिन पर तुम्हारी महबूबा दुनिया की सबसे कोमल उंगलियां फिराती थी। और जानते हो, इस टोप को पहनकर तुम बिल्कुल गंजे लगते हो, जैसे तुम्हारे दादा थे जिनके टकले को तुम तबला समझते थे। क्या वापस पाओगे उस बाल को, या वो तुम्हारे चमकीले बाल गुम हो जाएंगे तुम्हारे टोप के नीचे लगे जाल में? देखा, तुमने ये जाल ठीक तुम्हारे आंखों के सामने बुना गया है। देखा तुमने, ये जाल ठीक तुम्हारे आंखों के सामने बुना गया है ताकि सब कुछ देख सको तुम, सिर्फ उस जाल को नहीं। तुम्हारे साथ कई हजार टोपें एक लाइन में खड़ी हैं,
जैसे इतिहास में खड़ी हैं कई हजार तोपें एक साथ। तुम्हारे इस तोप के सामने अक्सर होते हैं बेकार नौजवान, वे नौजवान जिनमें तुम भी कभी शामिल थे, और तुम्हारे सामने खड़े रहते थे वही तोप। तुम समाज के पिछले तबके से आते थे, बड़ी मुश्किल से तुम्हें ये नौकरी मिली, और नौकरी मिलते ही तुमने अगली बरसात में ढह जाने वाली घर को संभाल लिया, और साथ ही साथ संभाल लिया उस टोप को भी, जिसे पहनकर तुमने उनको गेट से भीतर आने से रोक दिया जो तुम्हारे ही जाति से थे, तुम्हारे ही तबके के थे और तुम्हारी ही नौकरी के लिए मर रहे थे। तुम भूल गए तब तुम्हारे ज़मीन पर नीम की बोरियां गिरनी बंद हो गई थीं, जब विकास का हवाला देकर सरकार ने उसे हथिया लिया था। कितनी मुश्किल से तुमने अपनी बहन के नहाने के लिए टीन के घेरे से बगैर छत की बाथरूम बनाई थी। उन दिनों तुम घर की चार दीवारी बनाते थे, अब तुम बैरिकेड बनाते हो, और हाथ में आंसू गैस के गोले लिए कई घरों तक आंसू के कतरे छोड़ाते हो। और आखिरी दिन जब तुम्हारे कानों में ऑर्डर गूंजता है और तुम अपनी ही किसी टोप वाले की गोली का शिकार हो जाते हो, तब पहले तुम्हारा वो टोप गिरता है, फिर तुम्हारा सर गिरता है, और तुम ये भी नहीं समझ पाते कि सबसे पहले तुम्हें छोड़कर वो टोप ही गया, और आखिरी वक्त तक तुम्हारे साथ तुम्हारे बाल ही थे। तुम ये भी नहीं समझ पाए कि तुम्हारे ऊपर ये टोप किसने डाला, क्योंकि उस वक्त तुम्हारे सर और टोप के बीच फासला बहुत कम था। Salamullah ala Yasin Habibullah, Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah, Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. يا ربي بمصطفى وللمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم. When you see me, is this all you see? Oppressed cause I'm dressed as my creed is decreed. It's my choice, my way to voice what I believe and leave an identity. What is Islamic terrorism? This is quite an earnest term. Give me back my faith, don't hijack my faith, don't hate me for an idiot's mistake. Salatullah, here's my prayer. All I want is Islam in the clear, from those who pollute, convolute and misuse their beliefs, misconceive. Spread your love, not your fear. Sing Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. I do hope that the music, the melody, the rhythm, the lyrics, the movements, the poetry, and the messages that we received so generously given by artists belonging to various sections of society from across the globe has reaffirmed our belief that change needs to happen now, today, not in some distant future. Police reform, police sensitization, and a stop to violence is a necessity, needs to be a prerequisite in any civilized society. Justice Rocks wouldn't have happened if not for the time, for the hours and hours that so many volunteers dedicated to get it just right. Volunteers of The Wire, volunteers of Vetiver Collective, thank you all so much. You know who you are. But this is just the beginning. Justice Rocks, Armed and Dangerous, is not a culmination of people's responses. We hope it is the beginning of a movement that is not just responding to incidences, a movement that is not just reacting when somebody dies, but that
it is something people all constantly speak about and demand in our respective spaces and societies and communities. So we are not stopping here. Resources are available on the wire about police violence, about educating ourselves on our rights, about fighting this head on. So share those links with your friends, families, even people you don't know, because every member of society needs to participate in this very important movement. Before I end, I will remind you of one thing Umar Khalid said in that video which he recorded a few days before his arrest. He spoke about fear, not the fear of the person getting arrested, but the fear that that act instills on those watching, the spectators, you and me. So when the police or anybody in authority beats up citizens, arrests them without any evidence, the intention is to violate not only that individual, but violate every one of us. Instill in us a fear that will stop us from speaking, will stop us from singing, will stop us from writing, will stop us from participating as citizens of a society. We will not let that happen. Thank you very much.